Hello and welcome. The heartthrob of the nation is back with another sensational interview on your favorite show, Barely Speaking with Arnab. The show which is completely unscripted, just like Congress Manifesto. Today, I have with me the ex-Chief Minister of Delhi and the national convener of Aam Aadmi Party, Mr. Arvind Kejriwal. A man who based his moustache, hairstyle and entire political career on the Anil Kapoor film Nayak. Except Nayak ran on setbacks for more number of days than his government. So welcome, Mr. Kejriwal. Thank you. I think I made a mistake by coming here. That we'll find out. But before we start, Mr. Kejriwal, would you like some tea or coffee? Or some cough syrup? Maybe. Clear majority? वो तो हमें मिल रही है, clear majority मिल रही है हम लोगों को. All said and done, Mr. Kejriwal. You've brought upon a huge political revolution in this country. You stand for a new kind of politics. You claim to be the representative of Aam Aadmi. So when you go out in public dressed like this, are you trying to say that the Aam Aadmi has a bad dressing sense? Now Arnab, I wear whatever I feel comfortable, okay? I used to wear the same clothes before I became the chief minister. My political opponents, they criticize me for my political statements. You are criticizing me for my fashion statement. My wife keeps on criticizing me for my blank bank statement. Now this is not fair. No, once again. I will not tolerate anything against Bhabiji. Now please don't bring your family problems here. This is not Satyamev Jayate. This is my show. This is hard-hitting journalism buffering on your YouTube at 1 megabytes per second. Moving on, Mr. Kejriwal. You've been an active leader in the India Against Corruption movement. What are your views on corruption? Corruption is bad. Corruption is at the bottom of all the problems in this country. But honestly, Mr. Kejriwal, from one truth crusader to another, have you ever been involved in corruption, like some corrupt activities? No. Never? Never. Not even once? No, never. Mummy kasam? No, yeah, mummy kasam. Okay, so how do you know something is bad if you haven't even tried it? Like, I used to not like KFC, but then I tried it and now I find it finger licking good. Don't you think if you try corruption once, your opinions might change? Arnab, are you trying to defend corruption? No, but I'm saying that corruption has its own advantages. If you're on a train and you don't have a ticket, you give 500 rupees, the TC will give you a seat. You give 1000 rupees, the TC will give you his own seat. You give 1500 rupees, the engine driver will let you drive the train for a while. कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हो अर्नब आप? अपो घर की ट्रेन. करप्शन इज अ सीरियस इशू. आप अपने शोज में ऐसे बच्चों की तरह क्यों बिहेव करते हो? यू आर अ ग्रोन अप पर्सन नाउ, रियलाइज दैट. अभी हम आम आदमी पार्टी में एक बच्चों की विंग बना रहे हैं, छोटे बच्चों की. व्हाई डोंट यू जॉइन दैट? Moving on. What is this talk that if you win the Delhi elections, you will install 10 lakh CCTV cameras in Delhi? What next? Will you also have speakers which will say Big Boss चाहते हैं कि आप flyover number 6 के नीचे आ जाए? अर्नब, this is a serious matter. It's not a reality show. CCTV कैमरा पूरी दिल्ली के अंदर लगेंगे तो अगर कोई भी गलत काम करेगा, कोई भी क्राइम करेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो पकड़ा जाएगा. So this is for women's safety. This is for women's safety. This is for women empowerment. You say you believe in women empowerment, but your actions speak otherwise. Last election you contested for CM against Sheila Dikshit. You defeated her so badly that poor girl, she has left Delhi and gone to Kerala. This election also you are competing against Kiran Bedi, another woman. The only time you dared to fight against a man was in Banaras. And we all know how that turned out. Arnab, don't lecture me on women empowerment. What do you know about women empowerment? In your last show, you actually did not allow Miss Lekhu to speak. You were shouting and screaming at her. And in another show I saw, you were actually making jokes on Pariniti Chopra. Answering an accusation with another accusation. You have become a seasoned politician, Mr. Kejriwal. Just like the third act of Nayak. Moving on. Mr. Kejriwal, you have this habit of always criticizing Mr. Mukesh Ambani. Don't you feel afraid? Because the last time anybody messed with Mukesh Ambani, this is what happened to him. He is at least endorsing our party symbol Jhadu. No, that is not Jhadu. That is Swachh Bharat Abhiyan. There is a difference. You talk about cleaning politics, but what about cleaning the streets? Because your Aam Aadmi litters the most. He is not in danger of garbage. He is the danger. He is the great Indian litter bug. Now let me ask you one question. If you see somebody throwing garbage on street, do you go and stop him or do you take a U-turn and run away like always?
नो आई एग्री, हमारे देश के अंदर आम आदमी कई बार गंद फैलाते हैं, और जो हमने झाड़ू उठाई है, इस झाड़ू से हमें आम आदमी को देश की सड़कों की सफाई करना भी सिखाना है, घर की सफाई करना भी सिखाना है, राजनीति की सफाई करना भी सिखाना है, और अपने अंदर की सफाई करना भी सिखाना है. So, you are saying you are against garbage. So, if you are against garbage, then why is Somnath Bharti still in your party? सोमनाथ भारती बहुत मारेंगे आपको. सोमनाथ भारती इज अ वेरी नाइस पर्सन. सोमनाथ भारती इज एन एसेट टू द party. He is an asset to the country. Mr. Kejriwal, I heard you have a love marriage. How did you propose to her? What did Both you of us were together in academy in Nagpur, NADT. So one day I just went to her room and I knocked at her door. She opened the door and I said, I want to marry you. And she said yes. Well, she had to, otherwise you would have done a dharna outside her door. So on that note, I'm going to invite my second guest. Just like you, he is an Aam Aadmi. Just like you, he blames everybody else. Just like you, he is a drama queen. Let's bring our second guest for tonight, Mr. Arjun Kejriwal, the founder and filmmaker of Bollywood Aam Aadmi Party. Mr. Arjun Kejriwal, welcome to the show. Last time when you came to my show, you promised that within 15 days, you will launch the first cut of your film. But after 49 days, you left. Why? अर्नब जी, हमने 49 दिन काम किया था. उसमें जो ट्रेलर बनाया है वैसे इनसे फिल्में नहीं बन पाती हैं. इस देश की जनता हमें पुकार रही है और इस बार हम ऐसी फिल्म बनाएंगे कि जैसी देश की जनता 5 साल तक देखेगी. No, but Mr. Kejriwal, why did you run away? Why did you run away? No, not you. Why did you run away, Mr. Kejriwal? From the set you ran away? Why? The United Producers Alliance, UPA, keeps saying that you ran away. एक मिनट, हम लोग भागे नहीं थे जी. इन यूपीए वालों ने हमारे ऐन मौके पे सारे डिस्ट्रीब्यूटर छीन लिए थे. इन लोगों ने हमारी फिल्में रुकवा दी थी. जो हमने वादा किया था इस देश के आवाम से कि हम उनके लिए एक फिल्म बनाएंगे, वो इन्होंने पूरा नहीं होने दिया. लेकिन इस बार हम फिल्म बनाएंगे. इस बार हम उसलिए आ रहे हैं और इस बार हमने कोई गलती नहीं करेंगे और फिल्म बनाएंगे. Was it not because you became greedy and over ambitious? Because you got an offer from Hollywood? You wanted a bigger podium to promote your film. Was it not the case, Mr. Kejriwal? No, not you. And what about your guru and mentor Nana Patekar? Where is Nana ji? नाना पाटेकर की मैं बहुत No, but where is Nana ji? Arnab wants to know, where is Nana ji? वो मराठी पिक्चरों में काम कर रहे हैं. So, okay, so you basically used Nana ji to enter Bollywood. You want to go to Hollywood and you've left Nana ji to do Marathi movies? एक मिनट, No, but what is this? This is outrageous. You know what? Atamaji Satakle. मैं अपनी बात पूरी कर लूँ. अर्नब जी, अरविंद जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ. मुझे आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं. इस देश की जनता को थिएटर्स में लूटा जा रहा है. क्या बेचते हैं? 200 रुपये के नाचोस बेचते हैं. क्या होता है वो? मटरी तो होती है. 8 आने का जीरा लगा देते हैं, 10 पैसे की टमाटर की चटनी लगा देते हैं, 300 रुपये का सूप बना के बेचते हैं. इतने में ओल्ड मोंग का खंबा आ जाता है, वो ना पी लूँ. इन लोगों ने हमारी एक पिक्चर नहीं बनने दी. साजिद खान की पिक्चरों में एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जा रहा है. लूट मचा रखी है. 4-5 प्राइवेट जेट खरीद रखे हैं. हमारे पास तो एक ही जेट है, वो भी हमारे टॉयलेट में, कमोड में. यही तो स्कैम है सर. इसकी जांच कौन करेगा? हमें सर आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं. हमने आपके काफ़ी ईमानदारी कहानियाँ सुनी हैं. हमने तो इतना सुना है कि जब आपकी शादी में आपकी सालियों ने जूते चुराए थे तो आपने उनके खिलाफ भी FIR कर दिया था. हमने तो इतना भी सुना है कि आपके जो बच्चों की जो पॉकेट मनी है उसे भी आप TDS काटते हैं. सर आप हंसे जा रहे हैं. सर आप भी तो कुछ बोलिए ना सर. बिल्कुल ठीक है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए, हम आपके साथ हैं. सर आप मेरी मिमिक्री क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी मिमिक्री नहीं कर रहा. No, one second. No mimicry on my show. This is completely original. No imitations. This is not expected from you, Mr. Kejriwal. This show is completely original. This is not the Great Indian Laughter Challenge. This is my show. This is hard-hitting journalism buffering on your laptop screens at 1 megabyte per second. That's it. The interview is over. Thank you, Kejriwal and Kejriwal, for wasting my time. Tonight, I take this platform to challenge that man who imitates me on national television every night. If you have a sense of humor, come to my show and face me one-on-one. I dare you. I double dare you. And if you viewers want to see that debate, press that subscribe button. Thank you so much. I'll see you same time next time at prime time. हम लोग जितने नेता हैं ना, हमें अपने ऊपर भी थोड़ा हंसने की आदत होनी चाहिए. थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर सब लोगों को होना चाहिए.
आज द वायरल फीवर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है ये अपने सारे आईआईटी वाले ही हैं और ये तीनों के तीनों आईआईटी खड़गपुर के हैं, आईआईटी केजीपी का टेम्पो खाई है। तो बहुत इनके आप पिछले भी एपिसोड देखेंगे तो बहुत अच्छे एपिसोड्स बनाए हैं। आप लोग जरूर इन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने देश की सफाई करनी है अपने को, सड़कों की भी सफाई करनी है, अपने घर की भी सफाई करनी है हम लोगों को। और ये सफाई के लिए तो एक ही चीज़ सफाई कर सकती है, वो है हमारी झाड़ू। ये झाड़ू सारे द ग्रेट इंडियन लिटर बग के लिए है और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब जूनियर्स ने मिलकर के एक सीनियर की रैंकिंग की है और हम आशा करते हैं कि ये ट्रेडिशन कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू गाइस।